good morning children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home children. Children, first of all a very warm welcome to the new classroom in the class 12 as you all came from the class 11 and now it is your class 12. So a very warm welcome and I hope with this new journey you all will see the videos also. So today I will discuss something with you. So discuss with something with you. First of all, you should know children that there are total 7 chapters in your syllabus and not in total 7 but there are total 9 units, and the first chapter which we are going to discuss with you is the variations in psychological attribute. This is your first chapter children. So your first chapter is variations in psychological attribute. So let us discuss about that chapter only. So your topic is the chapter 1. Variations in psychological attributes. Here children, some of the terms you are observing here. The terms are, first is variation, another term is psychological, and third term is attribute. So first of all you should know what is attribute. Attribute क्या होता है? So you should know about this one, very important. Attribute basically refers to the characteristics of a person that make him or her unique. Okay, attribute क्या होते हैं? Persons के characteristics होते हैं जो उसे अलग बनाते हैं एक दूसरे से. Nobody's characteristics are the same. किसी की भी characteristics एक जैसी नहीं होती. When you see in the class also, even in the class also, you can see there are so many children are sitting over there and nobody is like the same. And these characteristics are differ on the ground of two things. First physical characteristic and second psychological characteristic. इन दो ground में ये दोनों चीजें differ करती हैं. Physical characteristics और psychological characteristics. When we talk about the physical characteristics, तो physical characteristics include the person's height, weight, person eye color, hair color, skin color. तो इन सारी चीज़ों पे difference होता है. तो person क्या होता है कि differ करता है. Similarly, the person not only differ on the ground of physical characteristics, but they also differ on the ground of psychological characteristics. सिर्फ फिजिकली लोग एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, साइकोलॉजिकली भी अलग होते हैं. इन द सेंस किसी की भी इंटेलिजेंस सेम नहीं होती, किसी की पर्सनालिटी सेम नहीं होती, किसी के वैल्यूज सेम नहीं होते, किसी की एटीट्यूड सेम नहीं होता, किसी का इंटरेस्ट सेम नहीं होता. नोबडीज एटीट्यूड इज सेम. So the people are not only different on the basis of their single characteristics, on the basis of their physical characteristics, but also on the basis of their psychological characteristics. So this chapter is basically all about focusing on the psychological characteristics of an individual. So you will find out this thing in this chapter also, variations in psychological attribute. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में क्या है? वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन. ओके, nobody is like that. So on the basis of this one, the topic and the term came is the individual differences.
individual differences. I want from you all to note it down, this particular term in your topic, individual differences. So individual differences को आप define करेंगे बच्चों. You will write down. It refers to the distinctiveness. It refers to the distinctiveness and variations among people characteristics. Variation among people characteristics and behavior patterns. Okay, write down this one. Note down करिए. It refers to the distinctiveness and variations among people characteristics and behavior pattern. So I hope you all have written it down. I am rubbing it with the hope कि आपने इसे note down कर लिया होगा. So after the individual differences, so one topic which will come is another term which will come is the situationistic perspective. Situationistic perspective. Okay, this comes situationistic perspective. Situationistic perspective tells that although I hope you have written it down. Okay, so situationistic perspective said that although there is an individual differences, ठीक है, individual difference होता है, nobody is like the same, but at some extent the people behave according to the situation. ठीक है, ऑल्दो सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सब एक दूसरे से अलग होते हैं, बट फिर भी कुछ लोग एक सिचुएशन आता है जब वहां पे सब एक जैसा बिहेव करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल गिविंग एनी जॉब इंटरव्यू, और लाइक इफ फॉर एग्जांपल इफ वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर क्लास आल्सो, that in your class there, if we suppose there are 20 students and 20 students are not like the same on the ground of physical characteristics and on the ground of psychological characteristics, but when the teacher enter in the classroom they all stand up and say good morning, so they are behaving according to the situation. So external factor, situationistic perspective talks about the external factor. कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है. सो दीज टू टर्म्स चिल्ड्रन यू हैव टू कीप इट इन माइंड. द वन इज अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अनदर इज अबाउट सिचुएशनिस्टिक पर्सपेक्टिव. यहाँ तक समझने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. तो ये चैप्टर प्योरली है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. सो हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होते हैं, तो हम उन्हें पढ़ेंगे. आफ्टर राइटिंग दिस वन, आफ्टर राइटिंग बोथ द पॉइंट्स, नाउ वी विल राइट अबाउट द एट्रीब्यूट्स. यू शुड स्टडी चिल्ड्रन कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं. ठीक है, कौन कौन से साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं चिल्ड्रन। तो सबसे पहला होता है इंटेलिजेंस, दूसरा होता है द सेकेंड वन इज पर्सनालिटी, थर्ड इज एप्टीट्यूड। Basically, in this chapter, you all have to study the 5 psychological attributes: intelligence, personality, aptitude, and fourth is interest. And fifth is values. Okay, fine. I want from you all to note it down, these 5 attributes: intelligence, aptitude, personality, interest, and values. Okay, let us discuss one by one each. First is intelligence. How you will define the intelligence? So children, intelligence क्या है? It is the ability to understand well, to judge well, and to reason well. If there is any person who have an ability to understand well, समझने की क्षमता रखता है, जज करने की रखता है, रीजन करने की रखता है, तो हम उसे इंटेलिजेंस कहते हैं. There are so many definitions you will find out in the related to the term intelligence. बहुत सारे मीनिंग और डेफिनेशन आप फाइंड आउट करेंगे रिलेटेड टू द टर्म इंटेलिजेंस. क्या क्या? वन ऑफ द डेफिनेशन वाज गिवन बाय द वेस्लर आल्सो, that intelligence क्या है? It is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with the environment. This is one of the definition which is given by a psychologist whose name is Wessler. उन्होंने कहा इंटेलिजेंस क्या है? ये एग्रीगेट कैपेसिटी होता है इंडिविजुअल का जो कि पर्पसफुली एक्ट करता है, रैशनली थिंक करता है और अपने इन्वायरमेंट से इफेक्टिवली डील करता है. उन्हें हम इंटेलिजेंस कहते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस इज एन इंटेलिजेंस. देन कम द पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. पर्सनैलिटी भी एक तरह का साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है. पर्सनैलिटी क्या होती है? इट रिफर्स टू दी दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन दैट मेक हिम और हर यूनिक, उसे यूनिक बनाता है. एंड पर्सनैलिटी द those characteristics of a person that are stable across situation over time and make him more unique. पर्सनालिटी क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसे लोगों से यूनिक बनाती हैं. पर्सनालिटी डज नॉट ओनली टॉक अबाउट द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, इट टॉक अबाउट द इनवर्ड अपीयरेंस, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, हाउ द पर्सन्स आर इंटरनली, व्हाट आर हिज और हर ट्रेट्स, व्हाट आर हिज और हर कैरेक्टरिस्टिक. Some of the characteristics of a person are stable and some of the characteristics of a person are unstable. They change with the time, they change with the environmental effect. Okay, so this is one of the points. Personality, intelligence. Then after this one come the aptitude. Aptitude क्या होता है? Aptitude is an underlying potential of an individual to acquire any kind of skill. Aptitude क्या है? किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए आप में जो पोटेंशियलिटी है उसे हम लोग एप्टीट्यूड कहेंगे. ठीक है? एप्टीट्यूड इज एन अंडरलाइन पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्वायर एनी काइंड ऑफ स्किल. किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए आप कितना पोटेंशियल हो, आप में कितनी एफिशिएंसी है, आप में कितनी एबिलिटी है, दैट कम अंडर द एप्टीट्यूड. देन कम टॉक्स अबाउट द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या है? engaging in one or more activity than the other. ठीक है? preference for giving the activity is known as interest. मतलब आप बहुत सारे एक्टिविटीज में से या बहुत सारे वर्क में से, टास्क में से किसी एक एक्टिविटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हो तो दैट इज ऑफ योर इंटरेस्ट. Out of so many things you are focusing on one thing for a longer period of time, so that is of your interest. Interest is also we discuss with the number or the amount of time you devote for any work, and without having any kind of
or any kind of fatigue. तो that is of your interest. बिना थके बिना रुके आप किसी काम को कंटिन्यूसली कर रहे हो और आप उसे इंजॉय भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके इंटरेस्ट का काम है. ओके, इट शोज योर इंटरेस्ट. ओके, और बहुत सारी चीज़ों में से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बट आप उनमें से किसी एक को चूज कर रहे हो तो वो आपका इंटरेस्ट है. जैसे व्हेन यू हैव टू चूज द स्ट्रीम, बहुत से स्ट्रीम होते हैं, एंड व्हेन यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट in your stream, there are so many subjects in your stream, but you choose some of the selected subject which is of your interest, जो आपके इंटरेस्ट के हो, जो आपको पसंद आते हो, आप उनको चूज करते हो, तो उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं. इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनैलिटी वॉज डन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एंड लास्ट इज द वैल्यू. वैल्यूज आर द इंड्यूरिंग बिलीफ. वैल्यूज आर द इंड्यूरिंग बिलीफ. वैल्यूज क्या है? ये इंड्यूरिंग बिलीफ है दैट अ पर्सन होल्ड अबाउट देमसेल्फ, जो पर्सन अपने बारे में होल्ड करता है. वैल्यूज हमें कई जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिकल वैल्यूज, तो ऐसे होता है. सो दीज आर द मेन 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्सन, and these attributes also make the person unique and different from each other. Okay, I want from you all to write down these descriptions which I have said to you. Okay, now I am going to write one by one their definition, and I want from you to note it down. First is the intelligence. Intelligence क्या है? Intelligence is the ability to understand well, judge well, और reason well. ठीक है, राइट इट डाउन चिल्ड्रन, इसे लिख लीजिए. देन ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू बिनेट एंड साइमन. अकॉर्डिंग टू Binet and Simon, intelligence. One of the definition which you are writing, okay, about the intelligence. I hope you all have written it down. So now come to the next. Personality. Personality क्या है? Personality refers to the characteristics of a person that makes him or her unique. Personality refers to the characteristics of a person that makes him or her unique. I want children to write it down also, the second part of this one.
Personality refers to the characteristics of a person that make him or her unique. Now come to the third point, attitude. This is all I am giving just a simple definition of each and every psychological attribute. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हम दे रहे हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का. थर्ड है एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड refers to the underlying potential. Aptitude refers to the underlying potential. Aptitude refers to the underlying potential for acquiring skill. Underlying potential for acquiring skills. Aptitude refers to the underlying potential for acquiring skill. This is also one of the general and the definition of the aptitude. I hope आपने लिख लिया होगा. Now moving to the interest. Interest, okay. So after the aptitude, let us study about the next one, interest. Okay. Interest क्या है? Fourth topic is the interest. Interest is another psychological attribute. Interest is a preference for or you can say that interest is engaging in a particular activity. 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 Interest is engaging in a particular activity more than others. Interest is engaging in a particular activity more than others. Write down this one about the interest. Interest is engaging in a particular activity more than others. This is the fourth point of the interest. Now come to the values, the last psychological attribute. I hope you all have written it down. आपने इसे लिख लिया होगा. So 4 psychological attribute हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. Now it is the time for the 5th one. Okay. Lastly, we discuss about the psychological attribute, which is the values. Values are the enduring belief. Values are the enduring belief that people hold about themselves. Values are the enduring belief that people hold about themselves. Values क्या है? ये एक तरह का enduring belief है जो कि लोग अपने बारे में रखते हैं. So write down this one also. This meaning. So overall we had discussed about all the 5 psychological attributes. These psychological attributes are also known as children domains. इन्हें हम domains भी कहते हैं. Domains of psychological attribute. So I just hope आपने लिख लिया होगा. हम लोग आगे बढ़े.
आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया एंड आई एम रबिंग इट विद द होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। ओके, सो चिल्ड्रन, we have discussed the 5 domains. We have discussed about individual difference. We have discussed about situationism, situationistic perspective. Now, one of the terms which you have to discuss about in this one is assessment. ठीक है, assessment play a very important role in each and everything. Like assessment भी बहुत ज़रूरी है. Like how you do the, like we know that person is different from each other because someone is holding the physical characteristic, someone is holding the psychological characteristic, and on the ground of that one there is an individual difference. But how you will do the assessment? Okay, assessment is also a very important term in this particular chapter in the starting. कि what is assessment? So basically assessment क्या है? Assessment is the measurement and evaluation of the psychological attribute by using multiple methods for that are standards for comparison. That is an assessment. Assessment क्या है? It can be done in 2 ways. It can be done formal assessment भी कर सकते हैं हम लोग. We can do the informal assessment. हम लोग assessment कैसे भी कर सकते हैं. Formal भी कर सकते हैं like through the taking the interview and observation, case study. तो इस तरीके से भी assessment कर सकते हैं. कुछ हम लोग informal भी कर सकते हैं self report लेके. तो इस तरीके से दोनों चीज़ों से हम लोग psychological attribute का measurement करते हैं. ठीक है. assessment, इसकी मीनिंग लिख लीजिए. It refers to the measurement and evaluation of psychological attribute by using multiple methods that are standardized. By using multiple methods that are standardized. It refers to the measurement and evaluation of psychological attribute by using multiple methods that are standardized for comparison. So here we completed the topic, children, about individual difference, about situationism, about assessment, about domains. Okay, what are the psychological attributes which you have to study in this particular chapter and you have to focus more. Okay, I want from you all to note it down, this meaning also. And I just say thank you so much for carefully observing this video and listening to me. I hope आपको समझ में आया होगा. Still, if you find any doubt, you ask me in the classroom. Okay, but I again said that please see the video. It will make your revisions and make your concept more clear. Thank you so much.